हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन मैजिक किचन ऑफ कृष्णा। आई एम शेफ कृष्णा और मैं आज लेकर आई हूँ यमी डिलीशियस एक बेकिंग रेसिपी। फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ स्पेशल पाव बनाने की रेसिपी। हम लोग बेकरी से लाने की जगह घर पे ही बना सकते हैं रुई जैसा सॉफ्ट पाव, और वो भी बहुत जल्दी। सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा चैनल, बेल आइकन जरूर दबाइए, अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिए। तो फ्रेंड्स, देखिए कितना यमी पाव है और बहुत सॉफ्ट है, रुई जैसा सॉफ्ट यमी डिलीशियस पाव घर पे आप बना सकते हैं। पाव बनाने की रेसिपी हम आपको वीडियो में टिप्स और ट्रिक्स के साथ देंगे। देखिए कितना यमी डिलीशियस पाव है, और बहुत से अच्छे से बटर से ग्रीस करने के बाद हमने इसको दोबारा बेक किया, और दोबारा बेक करने के बाद हमने इसे ढककर रखा तो इतना सॉफ्ट और रुई जैसा ये पाव बनकर रेडी हो गया। सो फ्रेंड्स, वीडियो me wind and rain, you're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak my mind. You're chilling wind and rain, you're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're chilling wind and rain, you're some kind of butterfly. Don't leave me here high and dry. Oh,
फ्लावर के साथ में। और इससे क्या होता है कि बटर पहले ऐड करने से बहुत अच्छे से वो उसकी जो आटे के साथ मिक्सिंग होनी चाहिए वो नहीं होता। तो आटे के साथ बटर को अच्छे से मलेंगे तभी ये डो बहुत सॉफ्ट होगा। ये देखिए हमने बहुत अच्छे से पूरा बटर हमने ये आटे के साथ फ्लावर के साथ अच्छे से मला है। इससे देखिए ये बिल्कुल ढल गया है। तो अब हम नीचे की तरफ इसको टक कर रहे हैं और करके हम इसे ऑयल से ग्रीस करके हम इसे क्लिंग रैप से रैप करके हम रख देंगे ओवन में, हल्के वार्म ओवन में 1 घंटे के लिए फर्मेंट होने के लिए। तो देखिए नीचे की तरफ हम टक कर दिया हमने जिससे ये बहुत अच्छे से फर्मेंट हो और एयर भर जाए इसमें। तो देखिए थोड़ा सा हमने ऑयल लिया और ऑयल से हम इसको ग्रीस कर रहे हैं जिससे ये चिकना बना रहे और ये ड्राई ना हो उसका सरफेस। तो हमने इसको ऑयल से ग्रीस कर दिया और अब हम इसको क्लिंग रैप से रैप करके हम इसको गरम ओवन में रख देंगे। गरम दैट मीन्स कि वार्म ओवन, बंद ओवन में हमें रखना।
Bye.